Good morning students. Welcome back to science class of 7. Children, in my previous video I had started a new chapter, that is chapter number 12 of science, and the name of the chapter is Reproduction in Plants. Okay, so in my previous video I had taught you what is reproduction, why reproduction is necessary for living organisms, and the types of reproduction in plants. Okay, so we have studied that there are two types of reproduction in plants, that is asexual and sexual reproduction. Okay, and in today's class I will be explaining you the types of asexual reproduction in plants. Okay, so let's get started. Asexual reproduction in plants. What is asexual reproduction? In asexual reproduction, new plants are produced from existing plants without the production of seeds. So in asexual reproduction, there is no formation of seeds because sex cells or gametes are not involved in the reproduction process. Okay, the new plants obtained by asexual reproduction methods are exactly identical to the parent plants. तो जो भी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, बट दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय सीड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. द वेरियस मेथड्स ऑफ asexual reproduction are: first one is vegetative propagation, second one is budding, third one is fragmentation, and fourth one is spore formation. So there are four major ways by which asexual reproduction can take place, that is budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. Okay, so before explaining you all these types of method, just have a look over this diagram. As you can see, diagram to show the node, axil and the stem in plants. So you can see कि आपको प्लांट के पार्ट्स पता होने चाहिए. See, this is the stem, you can see, and node. What is node? Node is the point where a leaf grows. ठीक है, node ऐसा पॉइंट है जहां वो स्टेम से कनेक्टेड होता है और लीफ वहां से ग्रो करती है. Then what is bud? Bud क्या होता है? Bud is the growing part of plants. Bud is the growing part of plants, and we know leaf is the food factory of the plant. And now axil, what is axil? The point between the stem and the node. The point between the stem and the node is called the axil. And what is leaf stalk? जो leaf की पीछे की डंडी होती है, the point at which the leaf is connected to the stem, that is called as leaf stalk. So these are some parts of the plant. You can see terminal bud, axil, auxiliary bud, leaf, node and stem. Vegetative propagation. Now we will study about the types of asexual reproduction, and the first one is vegetative propagation. Vegetative propagation is also known as vegetative reproduction. Means the reproduction in which no sex cells are involved, we do by the vegetative parts like root, stems and leaves. In vegetative propagation, new plants are produced from the parts of old plants like root, stem and leaves. तो vegetative propagation में हम old plant के parts जैसे कि stem, root और leaf से new identical plants grow करते हैं. It is also known as vegetative reproduction. Okay? और इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन बाय स्टेम. द स्टेम ऑफ अ प्लांट नॉर्मली bear buds in the axils which can be used in vegetative propagation to produce new plants. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है प्लांट का, उसमें क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं जो कि क्या करती हैं? दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स. New plants can be obtained from the stem by method of cutting. और जो न्यू प्लांट है हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग. इसमें हम क्या करते हैं? सपोज कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम स्टेम के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जैसे रोज है, बोगनविलिया है, कैक्टस है,
मनी प्लांट है, सो व्हाट वी हैव टू डू, शुगर केन है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, उस प्लांट का स्टेम काटना है, स्टेम काटना है। और स्टेम हम ऐसा काटेंगे कि उसमें कुछ बर्ड्स हो, जिसमें ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, बर्ड्स हो, वो ग्रो करें। फिर कट करने के बाद जो लोअर एंड है हम सॉइल में इंसर्ट कर देंगे और अपर एंड को एज इट इज छोड़ देंगे और फिर उसको प्रॉपर वाटर देंगे, सनलाइट देंगे। देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट ग्रोइंग और उसमें अपने ही बर्ड्स और लीफ और नया फुली प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, देन an advantage of cutting method is that by using this method we can produce many new plants from just one plant। और एडवांटेज है कटिंग का कि एक सिंगल प्लांट से हम कई सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज ए प्लांट हैव ए स्टेम, स्टेम में नोड और इंटरनेट होते हैं जिनको हम कट करके न्यू प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग फ्लावर्स एंड सीड, बिना सीड्स और फ्लावर्स के। नाउ ट्यूबर, it is the thickened underground stem of the plant which is swollen with stored food। जैसे जो आपने पोटैटो देखा है, पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। स्टेम यूजुअली क्या होता है, बाहर की ओर होता है और रूट अंदर की ओर होता है, लेकिन ट्यूबर क्या है, ये एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है जो थोड़ा स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है। There are two types of tubers, और दो तरह के ट्यूबर्स होते हैं, स्टेम ट्यूबर्स एंड रूट ट्यूबर्स। अगर स्टेम ट्यूबर की बात करें तो वो हमारा पोटैटो है, और अगर रूट ट्यूबर्स की बात करें तो स्वीट पोटैटो है, रेडिश है, ये सब हो गए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच हैव मॉडिफाइड thickened roots which bear birds। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट मॉडिफाइड होते हैं, थिक होते हैं, एंड दे bear birds so that new plants can be developed from it। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो जो कि शकरकंद होता है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ टाइम बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें बर्ड्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। वी कैन कट देम इनटू पीसेस एंड वी कैन पुट इनटू द सॉइल, बट each have one bird so that it can grow into a new plant। Now the third one is vegetative propagation by leaves। Some plants reproduce from leaves and develop birds on them। तो कुछ ऐसे plants है like bryophyllum and begonia जिनके leaves जो होते हैं वो new plant में develop हो सकते हैं। What happens in this, आपने अगर ब्रायोफाइलम का लीफ देखा होगा तो उसके मार्जिन, उसके किनारे किनारे स्मॉल स्मॉल रूट्स टाइप के डेवलप होते हैं जो कुछ टाइम बाद फुली ग्रो होने के बाद डिटैच हो जाते हैं, और जब वो डिटैच होके नीचे मिट्टी में गिरते हैं देन दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। सो इन दिस वे देयर इज नो नीड ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो there are three methods of vegetative propagation, that is by stem, by root and by leaves। अगर root की बात करेंगे it is done commonly, example is potato। ठीक, सॉरी, अगर stem की बात करें तो potato, root की बात करें तो sweet potato and bryophyllum की बात करें then it is through leaves। okay, now एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्या एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? द फर्स्ट वन इज दैट टेक मच लेस टाइम टू ग्रो एंड bears फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज कंपेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। और बहुत ही कम टाइम लेता है ग्रो करने के लिए एज कंपेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट। ओके, देन सेकेंड इज आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट because they are produced from the single parent। और जो भी organism produce होता है, new organism produce होता है, it is similar to the parent plant। Why? Because it is produced from the single parent। So all the desirable features of the parent plant will be replicated in the new plants। तो जितने भी desirable features हैं जो plant जो एग्जिस्टिंग प्लांट में है वो न्यू प्लांट जो होगा उसमें सारे फीचर्स आएंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द बडिंग
and spore formation. Okay, then you just go through the topic, learn all the key terms of the chapter. So this is your homework for today. Question number 1 is list various methods of asexual reproduction in plants. Question number 2, give the advantages of vegetative reproduction. Question number 3 is what is vegetative reproduction or propagation. Question number 4, define a tuber. And question number 5 is name 2 plants that reproduce through leaves. So children, these 5 question answers you have to write in your homework copy in a neat and clean handwriting. Okay, and go through the taught topics. That's all for today. Thank you, class.